Welcome back to Startup Street. Now, 92% of all women were found to have one or more gynecological diseases as per a report by National Institute of Health. Now, in our special series, Future Female Forward, we will put the spotlight on a startup which is using Ayurveda to solve gynecological and lifestyle-related disorders that women face today. Here's the story of Gynoveda. From the last 7 years, I've been facing problem from PCOD, and after marriage, I wanted to conceive, but the thing is, I was not able to conceive, and many people told me that you won't be able to conceive with PCOD. I was having a pigmentation problem since many years. I tried many things like local applications, I visited many dermat, but the problem never solved. I was detected with thyroid around 3 years ago. That's when the doctors had said that I'll be on medication lifelong, and just the thought of taking these medicines lifelong was something that didn't sit well with me. We as women roughly go through about 400 period cycles. And during these 400 cycles, which is roughly about 40 years, we go through various kind of problems, whether it's hormonal imbalance, irregular periods, PCOS, which is known as polycystic ovarian syndrome, vaginal infections, issues with trying to conceive naturally, and many other things. But I think what happens is we give so much of importance to taking care of others. Our own health becomes the last priority. As a narrative, we wanted to change. Founded in 2019, femtech startup Gynoveda is aiming to solve gynecological and lifestyle-related disorders women face from puberty to menopause through its Ayurveda-enabled self-care solutions. The firm claims to have invented a gynecology bot that uses artificial intelligence to enable women self-diagnose her reproductive health. We have a range of products for women from the age of 15 until the age of 55. So the first category that we established in the year 2019 was our menstrual health products. So everything to do around period health and freedom from PCOS. We saw lots of consumer insights coming to us saying that when women have PCOS, and especially women in the reproductive age, were finding it difficult to conceive. That's when we decided to bring out India's first natural ovulatory and fertility support supplement. Our other range of products are around skin and hair. According to the Gynoveda's research, 70% of women in India are suffering from low hemoglobin or are anemic. To tackle this, they have launched wellness supplements like iron and folic acid. The company is now looking to cater to niche categories such as respiratory issues, diabetes, osteoporosis, breast health, and menopause. We have our products classified under APM, which is Ayurvedic Proprietary Medicines. They are developed in-house by our research and development team. All of our products are FDA India certified. They are manufactured at locations which are GMP certified, which is good manufacturing practices. Gynoveda has reached 3 lakh women residing in over 20,000 pin codes of India and now aims to go global. I just consumed Gynoveda for around last 10 months. My periods were regular as and then I just skipped one of the month of my periods and I was pregnant. I saw the advertisement of Gynoveda. After 90 days almost, I started seeing results on my skin, my face. It started healing. I ordered this medicine called Kanchana Guglu from Gynoveda. The dosage of my medication has gone from 100 mcg to 25 mcg. Currently operating via D2C channels like its website and e-commerce marketplaces, Nykaa, Amazon, Flipkart, PharmEasy, NetMeds and Tata 1mg, Gynoveda is now looking to go omni-channel. Gynoveda revenues have tripled year on year to reach 100 crores annualized revenue run rate today. Consumer returning rate is about 52% for the business. We've clocked an average order value, which is AOV, of 2,000 rupees.
The next 3 years is about looking at, again, tripling the business year on year. The Ayurveda-backed women in healthcare startup has so far raised $10 million in Series A funding round led by India Alternatives Fund and others. With this funding, the company is looking to strengthen its R&D, formulating new Ayurvedic offerings, onboarding talent and expanding distribution channels. The aim is to change the lives of 1 million women, which according to the company is still a fraction of the billion women worldwide that need Ayurvedic solutions for gender-specific disorders. Aishwarya Anand for CNBC TV 18. और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गायनोवेदा की को-फाउंडर रचना गुप्ता। 2020 मार्च में गायनोवेदा की शुरुआत रचना ने यहां पर की और अब 1.5 साल पूरा होते होते एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो बाजार में वो लेकर आई हैं। अब सीधा रचना के पास ही चल लेते हैं, उनसे जान लेते हैं कि आखिर गायनोवेदा की कहानी क्या है। रचना, बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि मैं अभी दर्शकों को बता रही थी कि गायनोवेदा जो है इसकी शुरुआत आपने करीब करीब 1.5 साल पहले की। मुझे सबसे पहले ये बताइए कि इसकी शुरुआत के पीछे की कहानी क्या है, मकसद क्या रहा और क्यों आपने इस पर्टिकुलर सेक्टर को चुना, आयुर्वेदा को चुना? श्योर, थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो एक्चुअली मेरा बहुत ही फेवरेट है, बिकॉज उसके पीछे एक पर्सनल स्टोरी है हमारी। गायनोवेदा मेरे हस्बैंड विशाल गुप्ता और मैंने दोनों ने मिलके फॉर्मुलेट किया है और इसके पीछे एक्चुअली विशाल की पर्सनल स्टोरी है, बिकॉज बहुत सालों तक विशाल एक्चुअली सोराइसिस जो एक ऑटो इम्यून स्किन डिसऑर्डर है उससे उसकी तकलीफ से जूझ रहा था एंड ही ट्राइड एवरीथिंग पॉसिबल। आई मीन उसने ऐसा कुछ भी नहीं ट्राई किया था एंड ही वॉज कॉन्स्टेंटली स्ट्रगलिंग। हम दोनों कॉर्पोरेट लाइफ में थे, कभी उससे रिलीफ नहीं मिला। थोड़े दिन तक वो प्रॉब्लम चली जाती थी लेकिन फिर से दोबारा आ जाती थी। एंड उसी दौरान जब उसने सब कुछ ट्राई करके वो हार चुका था, ही डिस्कवर्ड आयुर्वेदा। और उसके जो उसने आयुर्वेदा में जो नुस्खे थे, आयुर्वेदा से जो उसने बेनिफिट पाया, वो हमेशा के लिए उसकी प्रॉब्लम ठीक हो गई। और वो एक्चुअली दैट वाज अ टाइम जब आयुर्वेदा की नींव हमारे जिंदगी में पूरी तरह आ चुकी थी। और फिर हमने कई बार ऐसे इंस्टेंसेस देखे जहां पर हमारा उस टाइम पे 8 साल का बेटा, उसको कॉन्स्टेंटली कफ एंड कोल्ड होता था, वो आयुर्वेदा से ठीक हुआ। मुझे डेंगू हो गया था, वो आयुर्वेदा से ठीक हो गया। सो इतना सारा कॉन्फिडेंस मिला था आयुर्वेदा के ऊपर कि हमें ये जरूर पता था कि हमें इस स्ट्रीम में कुछ करना है। लेकिन हम तब दोनों अपने कॉर्पोरेट लाइफ में बिजी थे। नहीं पता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम खुद जिस मेडिकल साइंस में बिलीव करते हैं उस साइंस को आज गायनोवेदा के द्वारा विल बी एबल टू रीच लैक्स ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सरल भाषा में अपने दर्शकों को बता दूं कि गायनोवेदा जो है वो पहला फेमटेक है जो कि टेक्नोलॉजी और आयुर्वेदा की मदद से महिलाओं की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, पीरियड प्रॉब्लम्स होती है, उनको सॉल्व करता है। अब गायनोवेदा के प्रोडक्ट्स की बात करूंगी। मुझे बताइए कि प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट सब फीमेल्स की गायनोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स होती है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, लेकिन दवाई हर किसी को अलग अलग दी जाती है। ऐसे में किस तरह का रिसर्च आपने किया एक ऐसा सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए अपने कस्टमर्स को या हमारे देश में रहने वाली तमाम महिलाओं को, पुरुषों को, कि सोल्यूशन जो है वो आयुर्वेदा में है और बहुत आसानी से अवेलेबल है? सो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन पॉइंट आगे लाया है कि हम महिलाओं को जो 15 साल की उम्र से लेके 50 साल तक हमें जो भी गायनेकोलॉजिकल, स्पेसिफिकली जो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होते हैं, आई थिंक हमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये समझ में आता है कि इसके साथ तो हमें जिंदगी भर जीना है। हमें बताया ही नहीं जाता कि ये प्रॉब्लम्स ट्रीट हो सकती है। और आयुर्वेदा के स्क्रिप्चर्स में
जो आप देखेंगे 4000 5000 साल पुराने जो आयुर्वेदिक स्क्रिप्चर्स हैं, जैसे चरक संहिता, इन सब में एक्चुअली बहुत जबरदस्त इसका तोड़ लिखा है। लेकिन इसको आगे लाने के लिए आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है कि हर प्रॉब्लम के लिए वो कौन से ऐसे नेचुरल हर्ब्स हैं जो जब साथ में लाए गए तो इट कैन मेक अ रूट कॉज सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम। और वही हमने किया है। सो हमारी थर्ड पार्टनर इस जर्नी में है डॉक्टर आरती पाटिल, जो एमडी ऑब्स्टेटिक्स और गायनेकोलॉजिस्ट हैं, और उनके एक्सपीरियंस ऑफ 10 इयर्स में उन्होंने 5000 विमेन से भी ज्यादा विमेन को ट्रीट किया था आयुर्वेदा के द्वारा। तो गायनोवेदा में हमने देखा कि नॉट जस्ट इंडिया में बट पूरे वर्ल्ड में विमेन की प्रॉब्लम सेम है। पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, आज एक बहुत बड़ी मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है। इरेगुलर पीरियड्स, डिलेड पीरियड से विमेन गुजरती हैं, हैवी ब्लीडिंग से होता है, फाइब्रॉइड्स होते हैं, एंडोमेट्रियोसिस होता है, और खास करके पीरियड पेन। और ये सब में एक्चुअली क्या होता है कि हम कोई भी पेन किलर्स खा लेते हैं, कोई हार्मोनल पिल्स ले लेते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम को जड़ से ठीक नहीं करता। तो हमने आयुर्वेदिक स्क्रिप्चर्स से जो फॉर्मुलेशंस निकाले हैं वो एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ पावरफुल हर्ब्स हैं। ऐसे बहुत सारे हर्ब्स हैं आयुर्वेदा में, जैसे कांचनार, शतावरी, दशमूल, पिपली, इन सबको एक सही प्रोपोर्शन में मिक्स करके जब लिया जाता है तो वो प्रॉब्लम को पूरी तरह ठीक करता है। हाँ, ये बात जरूर है कि ये ओवरनाइट कोई मैजिक पिल नहीं है। इसमें आपको, हम हमेशा कहते हैं, जल्दी नहीं जड़ से। जो भी विमेन प्रॉब्लम से गुजर रही है, मैं नहीं चाहती हूं कि कोई भी जिंदगी भर उनको ये प्रॉब्लम रहे, वो हमेशा के लिए ठीक होना चाहिए। और ये हमारा दावा है कि आयुर्वेदा ये जड़ से ठीक करता है। बिल्कुल। लेकिन रचना, आपने देखा होगा कि यूजुअली जब इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है तो हम बहुत जल्दी से जल्दी उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उस प्रॉब्लम से गुजरना, फिर चाहे मेंटली हो या फिजिकल हो, काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। ऐसे में कैसे आप कन्विंस करती हैं कस्टमर्स को, या जो दर्शक इस समय आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं? आयुर्वेदा हम सब जानते हैं कि ऐसा बेहतरीन और ऐसा हमारे देश का पुराना दिया हुआ ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे दुनिया भर में आज की तारीख में पसंद किया जाता है, अपनाया भी जाता है, लेकिन उस स्लो प्रोसेस का जो रिजल्ट है वो बहुत स्लो होता है। तो उसे लेकर क्या कुछ आप कहती हैं और किस तरह से अवेयरनेस जनरेट करती हैं? यस, ये एक्चुअली आपने सही कहा। दिस हैज बीन वन ऑफ द चैलेंजेस जो हमने बहुत गायनोवेदा की जर्नी में शुरुआत पे ही इसको एड्रेस करने की कोशिश की। दो चीजें हैं। एक तो एजुकेट करने की जरूरत है। सबसे पहले विमेन को एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि व्हाई शुड दे चूज आयुर्वेदा ओवर व्हाटएवर सॉल्यूशंस इज अवेलेबल। और यहाँ पे डॉक्टर के द्वारा जब हम एक्सप्लेन करते हैं कि इसका रूट कॉज क्या होता है और वो अंडरस्टैंडिंग एक बार क्लियर हो गई, तो एवरीबडी इज ओपन टू ट्राइंग समथिंग विच इज सेफ, विच इज नेचुरल, जिसमें कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। एंड द सेकेंड थिंग इज, आपको हर ब्रांड के लिए बहुत जरूरी है कि उसकी फाउंडेशन जो हो वो ट्रुथ पे हो, वो ट्रस्ट पे हो, वो ट्रांसपेरेंसी पे हो। और वही चीज हमने की है। हमने देखा है कि इस जर्नी में 14 साल 17 साल की भी यंग लड़कियां, जिनको अपनी माओ ने बताया है कि आपको कोई भी हार्मफुल चीज नहीं लेना चाहिए, आयुर्वेदा पे विश्वास कीजिए, वो भी आज आयुर्वेदा में बिलीव करती हैं। तो जितना आप वापस स्टोरीज दिखाते हैं विमेन को जिन्होंने मैजिकल कुछ ट्राई किया 2 दिन में और वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन जहां 2-3 महीने में उनकी पूरी प्रॉब्लम ठीक हो गई, जहां पे महिलाओं को कंसीव करने की तकलीफ हो रही थी पीसीओएस की वजह से, वो कंसीव कर पाए, वो मदर बन गई। ऐसी जब पावरफुल पर्सनल स्टोरीज, नरेटिव्स बाहर आती हैं तो बहुत सारी विमेन जो इस प्रॉब्लम से जूझ रही है उनको लगता है कि फाइनली देयर इज होप।
एंड देयर इज अ सोल्यूशन जो उनको बल्कि ठीक ही नहीं करेगा लेकिन कभी भी इस प्रॉब्लम्स में वापस आने नहीं देगा. दैट इज व्हेन द शिफ्ट और द ट्रांजिशन हैपेंस. बिल्कुल. चलिए, एज एन एंटरप्रेन्योर अगर आपकी जर्नी समझना चाहूँ, अब 1.5-2 साल की आपकी जर्नी है फिलहाल अभी तक की, और जाहिर तौर पर शुरुआत में चैलेंजेस बहुत आते हैं. आपने किस तरह के चैलेंजेस फेस किए हैं और क्या एक्सपेक्ट करती हैं, क्योंकि जो लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स है वो हम देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट पर अवेलेबल है और लोग वहाँ से उन्हें खरीद भी सकते हैं, लेकिन शुरुआती तौर पर इस तरह के स्टार्टअप को चैलेंजेस कई आते हैं. आपने क्या कुछ फेस किया? बिल्कुल. आई थिंक कोई भी एंटरप्रेन्योर की जिंदगी चैलेंजेस के बगैर पूरी नहीं है. और जबकि मैंने कहा कि हमने मार्च में शुरुआत की थी और सबको पता है कि पिछली साल मार्च में क्या हुआ. विदिन 3 months ऑफ लॉन्चिंग gynoveda.com कोविड हो गया. और तब ऐसा समय था जहां पर कोई भी ऑपरेशंस अलाउड नहीं थे. सबकी जिंदगी में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज थी. लेकिन हमें पता था कि पीरियड्स ऐसी चीज है जो कोई भी पैंडेमिक के लिए रुकती नहीं है. अगर वुमेन को कोई भी तरह की पीरियड प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्यूशंस तो देना ही चाहिए. सो हम एसेंशियल सर्विसेज कैटेगरी में आते हैं और हमने फिर ट्राई किया कि वी विल रिज्यूम ऑपरेशंस. सो अप्रैल में वी गॉट बैक. लेकिन उस दौरान बहुत सारी तकलीफें थी. एक, ब्रांड बहुत ही नया था. और अभी जो आपने मुझे पिछला क्वेश्चन पूछा था कि हाउ डू यू गेट विमेन टू बिलीव कि ये लॉन्ग टर्म है लेकिन इसमें विश्वास रखिए, तो वो तो बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे लिए कि नई ब्रांड है, आयुर्वेदा है और आयुर्वेदा पीरियड प्रॉब्लम्स ठीक करता है, ये भी किसी को पता नहीं था. आयुर्वेदा आज तक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जैसे अस्थमा, आर्थराइटिस वगैरह ठीक करता है, इसकी तो नॉलेज है. लेकिन टू कन्विंस यंग विमेन कि आयुर्वेदा इसे जड़ से ठीक करेगा, इसके पीछे हमने काफी सारा एम्फसिस कंटेंट और एजुकेशन पे डाला. और वो हमारे लिए बहुत ही स्लो स्टार्ट रहा, लेकिन आई वुड से थैंकफुली बहुत ही स्टेडी स्टार्ट रहा. बिकॉज इस तरह की जब ऑनेस्ट ओपिनियंस और जब रियल स्टोरीज विमेन जो कैमरा पे आके अपनी स्टोरीज बताती थी, ये जब दर्शकों के सामने आया तो लोगों ने कहा कि यार अगर इनकी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है तो मैं भी ठीक होना चाहती हूँ. सो चैलेंजेस कोविड के दौरान चैलेंजेस थे ऑफ ऑपरेशंस, नए ब्रांड के चैलेंजेस थे कि कैसे लोगों का ट्रस्ट, कैसे लोगों का विश्वास जीता जाए. बट आई थिंक अभी तो बहुत बड़ी लंबी मंजिल है हमारी. एंड धीरे धीरे करके कंटेंट के बेसिस पे, कस्टमर स्टोरीज के बेसिस पे कम्युनिटी हमने बनाई है फेसबुक पे जहां विमेन जुड़ गए हैं आज. Thousands of women who have come together to solve period problems. I think brick by brick gynoveda की बिल्ड हो रही है. बिल्कुल बिल्कुल, बिल्डिंग बनेगी, शुरुआती कदम है और यकीन मानिए आप उस मंजिल को भी छू लेंगी जिसका सपना आपने देखा है यहाँ पर. बहुत बहुत शुक्रिया रचना आपका हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए, इस बातचीत में शामिल होने के लिए. मेरी पूरी ही टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं. आप नमस्कार, मी अमृता आकाश. आरोग्यम धनसंपदामध्ये आपलं स्वागत. आरोग्यम धनसंपदामध्ये आज आपण वंध्यत्व आणि महिलांच्या आरोग्यासाठी आयुर्वेद याविषयी माहिती घेणार आहोत आणि आपल्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी आपल्यासोबत आहेत गायनोवेदाच्या चीफ डॉक्टर आणि को फाउंडर डॉक्टर आरती पाटील. डॉक्टर, कार्यक्रमात आपलं स्वागत. नमस्कार. विषयाला आपण सुरुवात करणार आहोत त्याआधी आपण डॉक्टरांची ओळख करून घेऊयात. डॉक्टर आरती पाटील यांनी आयुर्वेदातून स्त्री रोग आणि प्रसूती या विषयामध्ये MD केलंय. त्यांच्या 18 वर्षाच्या कारकिर्दीत त्यांनी सर्व वयोगटातील 20,000हून जास्त महिलांच्या स्त्रीविषयक समस्यांचं आयुर्वेदाच्या मदतीने यशस्वीपणे उपचार केलेत. जास्तीत जास्त महिलांपर्यंत पोहोचण्याच्या त्यांच्या स्वप्नाबरोबर गायनोवेदा या ऑनलाईन माध्यमातून गेल्या 3 वर्षात 3 लाखाहून जास्त महिलांना आयुर्वेदिक औषधांचा फायदा झाला आहे. या औषधांचे डॉक्टर आरती यांचे अनेक लेख तसंच रिसर्च पेपर राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेत. विविध माध्यमातून अतिशय सोप्या शब्दात स्त्री रोगाविषयीची माहिती महिलांपर्यंत पोहोचवण्यात त्यांचा हातखंडा आहे. मासिक पाळीच्या सर्व तक्रारी, अनियमितता, PCOD, वाईट डिस्चार्ज, योनी संसर्ग,
फायब्रॉइड्स, एन्डोमेट्रियोसिस, मेनोपॉज, गर्भिणी विकार आणि आजकाल सर्वात मोठ्या प्रमाणात भेडसावणारी समस्या म्हणजे वंध्यत्व, म्हणजेच ज्याला आपण इनफर्टिलिटी म्हणतो, या विषयामध्ये देखील डॉक्टर आरती तज्ज्ञ आहेत. तर आजचा विषय ज्यांना वंध्यत्वाच्या समस्या आहे किंवा आपली बदलती जीवनशैली यामुळे अनेकांना उशिरा पाळी येते आणि अशा अनेक समस्या असतात, याविषयी आपण बोलणार आहोत. सगळ्यात आधी इनफर्टिलिटी म्हणजेच वंध्यत्व हे आजकाल मोठ्या प्रमाणात आपल्याला पाहायला मिळतं. यामागे कारणं तुम्हाला कोणती वाटतात? गेल्या 2-3 दशकांमध्ये भारतीय महिलांच्या प्रजनन क्षमतेमध्ये लक्षणीय घट झालेली आहे, ज्याच्यामुळे दर 4 मधील एका महिलेला वंध्यत्वाच्या समस्येला सामोरं जावं लागतंय. आणि आयुर्वेदानुसार याचं मुख्य कारण सांगितलं गेलंय चुकीचा आहार आणि विहार. चुकीच्या आहाराबद्दल आपण जेव्हा बोलतो तेव्हा त्यामध्ये प्रामुख्याने आहारामध्ये वाढतं फास्ट फूड, जंक फूड, प्रोसेस्ड आणि पॅकेज फूड यांचं प्रमाण, याचबरोबर साखरेचे पदार्थ, रिफाईंड खाद्यतेल, मैद्याचे पदार्थ यांचं वाढतं प्रमाण आणि याचबरोबर मद्यपानाचं वाढतं प्रमाण आणि कॅफेनचा वाढता वापर यांचा प्रजनन क्षमतेवर विपरीत परिणाम होत असतो. आपण जेव्हा चुकीच्या विहाराबद्दल बोलतो तेव्हा सततचा आणि वाढता मानसिक ताणतणाव, जेवणाच्या वेळेतला अनियमितपणा, 2 जेवणांच्या मध्ये सतत खाण्याची सवय, याचबरोबर झोपेच्या चुकीच्या सवयी म्हणजे रात्री उशिरा झोपणे, सकाळी उशिरा उठणे आणि दिवसा झोपणे यासारख्या सवयी, व्यायामाचा अभाव आणि याचबरोबर धूम्रपानाची वाढती सवय अशा सारख्या विहारांचा प्रजनन क्षमतेवर विपरीत परिणाम होतो. आणि अशा चुकीच्या आहार विहारांच्या सवयींमुळे स्त्रीबीज आणि पुरुषबीज यांच्यावर विपरीत परिणाम होऊन वंध्यत्वाची समस्या वाढीस लागते. म्हणूनच जी दाम्पत्य गर्भधारणेसाठी प्रयत्न करत आहेत त्यांनी आपल्या आहार विहारावर खास लक्ष देणं आवश्यक आहे. आणि आयुर्वेदानुसार हा चुकीचा आहार विहार वाढत्या वंध्यत्वाच्या समस्येचं मूळ कारण आहे. तर जसं तुम्ही आता वंध्यत्वाविषयी सांगितलं, मात्र गर्भधारणा होण्यासाठी आपण बघतो की अलीकडे आपल्याकडे खूप ऑप्शन्स आहेत. IVF असेल किंवा IUI असेल, या कॉमन जरी आपल्याकडे फॅसिलिटीज उपलब्ध असल्या तरी नैसर्गिकरित्या देखील गर्भधारणा राहणे शक्य आहे का? हो, आयुर्वेदाच्या मदतीने IUI आणि IVF सारख्या कृत्रिम उपचार पद्धतींशिवायही नैसर्गिकपणे गर्भधारणा होणं शक्य आहे. गर्भधारणा होणं ही एक किचकट प्रोसेस असते, ज्याच्यामध्ये अनेक छोट्या छोट्या स्टेप्स असतात आणि गर्भधारणेच्या या प्रत्येक पावलावर मदत करण्यासाठी आयुर्वेदामध्ये अनेक प्रभावी औषधी सांगितल्या गेलेल्या आहेत. उदाहरणार्थ, अंड्याची योग्य वाढ होण्यासाठी शिवलिंगी नावाची औषधी अतिशय उपयुक्त असते. अंड फुटून बाहेर पडण्यासाठी कुमारी म्हणजे ज्याला आपण ॲलोवेरा म्हणतो ही औषधी अतिशय उपयोगी ठरते. गर्भ रुजण्यासाठी पुत्रंजीवक नावाची औषधी उपयोगी पडते आणि गर्भ रुजल्यानंतर त्याला जे पोषण मिळतं त्याच्यासाठी जिवंती नावाची औषधी अतिशय उपयुक्त ठरते. अशा प्रकारे गर्भधारणेच्या प्रत्येक पावलावर मदत करण्यासाठी अनेक प्रभावी आयुर्वेदिक औषधांच्या मदतीने नैसर्गिकपणे गर्भधारणा होणं सहज शक्य आहे. अगदीच. मात्र आपण आयुर्वेदानुसार जर विचार केला तर वंध्यत्वाची नेमकी मूळ कारणं कोणती? तर आयुर्वेदाचा जो मूळ सिद्धांत आहे तो आहे वात, पित्त आणि कफ, ज्याला आपण त्रिदोष म्हणतो. हे 3ही घटक आपल्या शरीरातल्या सगळ्या कार्यांवर नियंत्रण करत असतात. प्रजनन संस्थेमध्ये सुद्धा सर्व कार्य वात, पित्त आणि कफ हे घटकच नियंत्रित करतात. उदाहरणार्थ, प्रजनन क्षमतेमध्ये होणाऱ्या सर्व हालचाली नियंत्रण करण्याचं काम वात घटक करत असतो. स्त्रीबीज अंडाशयातून निघून गर्भाशयापर्यंत पोहोचण्यासाठी बीजवाहिनी नलिकेच्या एक विशिष्ट पद्धतीच्या हालचाली होणं आवश्यक असतं, ज्याच्यावर वात घटक नियंत्रण करतो. याचप्रमाणे गर्भाशयामध्ये रुजण्यासाठी गर्भाशयाच्या आतला जो स्तर असतो त्याच्यामध्ये विशिष्ट रचनात्मक बदल होणं आवश्यक आहे, ज्याच्यावर पित्त हा घटक नियंत्रण करतो. आणि कफ हा घटक आहे हा पोषणासाठी कार्य करतो. म्हणूनच अंड्याची योग्य वाढ होण्यासाठी त्याला जे पोषण हवं असतं ते पुरवण्याचं कार्य कफ हा घटक करतो. याचप्रमाणे गर्भ रुजल्यानंतर त्याला योग्य प्रकारचं पोषण मिळावं हे कार्य सुद्धा कफ हा घटक नियंत्रित करत असतो. अशा पद्धतीने वात, पित्त आणि कफ या 3ही घटकांचं कार्य प्रजनन संस्थेमध्ये जेव्हा समतोल प्रकारे होतं तेव्हा गर्भधारणा होते. आणि जेव्हा या 3 घटकांमधला समतोल नाहीसा होतो, असंतुलन निर्माण होतं, तेव्हा वंध्यत्वाची समस्या निर्माण होते. आणि याचं मुख्य कारण असतं तुमच्या चुकीच्या आहार विहारांच्या सवयींमध्ये. म्हणूनच वात, पित्त आणि कफ यामध्ये असणारं असंतुलन हेच वंध्यत्वाचं मुख्य कारण म्हटलं जाऊ शकतं.
वंध्यत्वाचं जे मुख्य कारण आहे हे तुम्ही सांगितलं, मात्र वंध्यत्वाशी निगडीत ज्या वेगवेगळ्या समस्या आहेत त्या देखील मग आपण आयुर्वेदाच्या मदतीने सोडवू शकतो का? वंध्यत्वाशी निगडीत जवळजवळ सर्वच समस्यांवर आयुर्वेदाच्या मदतीने प्रभावीपणे उपचार करता येतात. वंध्यत्वाची 5 प्रमुख कारणं आहेत. पहिलं कारण आहे PCOD. दुसरं कारण आहे ओव्ह्युलेशनच्या संदर्भात होणाऱ्या समस्या. तिसरं महत्त्वाचं कारण आहे कमी वयामध्ये अंड्यांची संख्या कमी होणे म्हणजेच लो AMH. चौथं कारण आहे वयाच्या 40 नंतर जेव्हा स्त्रिया गर्भधारणेसाठी प्रयत्न करतात तेव्हा निर्माण होणाऱ्या समस्या. आणि 5वं अतिशय महत्त्वाचं कारण आहे अनएक्सप्लेन्ड इन्फर्टिलिटी, म्हणजे जेव्हा सर्व तपासण्या नॉर्मल असतात आणि तरीही गर्भधारणेमध्ये समस्या निर्माण होतात. याबरोबरच फायब्रॉइड्स किंवा एंडोमेट्रियोसिस सारख्या अनेक कारणांमुळे सुद्धा वंध्यत्वाची समस्या निर्माण होऊ शकते. आणि या सगळ्या समस्यांवर आयुर्वेद अतिशय प्रभावीपणे कार्य करतो. आयुर्वेदाच्या मूलभूत सिद्धांतांना धरून प्रभावी औषधींच्या द्वारे या सगळ्या समस्यांवर उपचार करणे अगदी शक्य आहे. आणि गायनोवेदामध्ये 10,000 पेक्षा सुद्धा जास्त स्त्रियांना या औषधींच्या मदतीने नैसर्गिकपणे गर्भधारणा होताना आम्ही अनुभवलेलं आहे. याचबरोबर 3,000 पेक्षा सुद्धा सुदृढ बाळांचा जन्मसुद्धा झालेला आहे. तर वंध्यत्वाच्या समस्येवर आपण आयुर्वेदानुसार उपचार करू शकतो. आणि बऱ्याच मुलींमध्ये जर आपण बघितलं तर कमी वयामध्ये त्यांच्यात अंड्याची संख्या देखील कमी असते, कुठेतरी गर्भधारणा व्हायला देखील उशीर होतो किंवा गर्भधारणा होत नाही. तर अशा मुलींच्या बाबतीत देखील आयुर्वेदामध्ये कशा पद्धतीने आपण उपचार करू शकतो? लहान वयामध्ये अंड्यांची संख्या कमी होण्याची 5 प्रमुख कारणं आहेत. अँटीबायोटिक्सचा दीर्घकालीन वापर किंवा अंडाशयाचा तीव्र संसर्ग, ज्याला आपण सिव्हिअर इन्फेक्शन असं म्हणतो. अचानक वाढलेला तीव्र पद्धतीचा मानसिक ताणतणाव किंवा धूम्रपान आणि मद्यपानाची असलेली सवय आणि अनुवांशिकता सुद्धा याचं एक महत्त्वाचं कारण आहे. शास्त्रीयदृष्ट्या या अंड्यांची संख्या वाढवणं जरी शक्य नसेल तरी आयुर्वेदाच्या मदतीने या अंड्याची गुणवत्ता वाढवणं मात्र अगदी सहज शक्य आहे. आयुर्वेदामध्ये सांगितलेल्या औषधींमध्ये शिवलिंगी या औषधीच्या मदतीने या अंड्यांची गुणवत्ता अतिशय उत्तम प्रकारे सुधारता येते. याचप्रमाणे कुमारी किंवा ज्याला आपण ॲलोवेरा म्हणतो अशा पद्धतीच्या औषधींच्या मदतीने अंड फुटून योग्य वेळी बाहेर पडेल यासाठी सुद्धा मदत करता येते. अशा पद्धतीने लो AMH म्हणजे अंड्यांची संख्या कमी असताना सुद्धा आयुर्वेदाच्या मदतीने गर्भधारणा होणे अगदी सहज शक्य आहे. अगदी अलीकडेच 0.02 इतका कमी AMH असताना सुद्धा आयुर्वेदाच्या मदतीने नैसर्गिकरित्या गर्भधारणा झालेली उदाहरणे आम्ही गायनोवेदामध्ये पाहिलेली आहेत. प्रेगनेंसी के बारे में 28 नवंबर पता चला. 14 नवंबर को मुझे पीरियड आना था जो कि मुझे स्किप हो गया था. मॉर्निंग 6 o'clock वो ही टॉयलेट में गए और मैंने कहा चलो चेक कर लेते. तो चेक किया तो फिर फटाक से एकदम डार्क 2 lines आया. आई एम वेरी शॉक्ड कि ये कैसे हो गया. जब चाहा तब तो मिला नहीं और एकदम से जब स्टॉप करने के बारे में सोचा तो भगवान ने कहा नहीं अभी रुको. जब उनको पता चला तो इतने खुश, मदर इन लॉ इतनी खुश, सिस्टर इन लॉ इतनी खुश, वो तो मतलब पूछो मत. लाइक इन लॉज वालों को बहुत ज्यादा खुशी है. मेरी पीरियड्स की जो जर्नी है डे 1 से व्हेन आई वाज 14 years, जब से ही मेरी मतलब पीरियड हिस्ट्री खराब रही. आफ्टर मैरिज तो ठीक रहा बट बेटी होने के बाद 1.5 साल तक मुझे पीरियड नहीं आया. मैंने लोकल गायनोकोलॉजिस्ट छोटे जैसे डॉक्टर्स बैठे होते हैं उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे टेस्ट वगैरह कराने के लिए दिए बहुत सारे. फिर मुझे लगा कि शायद मेडिसिन से क्योर हो जाएगा. कुछ फर्क नहीं पड़ा. प्रॉब्लम क्या आई थी, वेट और बढ़ गया था. मूड काफ़ी हद तक स्विंग्स हो रहे थे. बहुत डॉक्टर्स को कंसर्न किया, नहीं मैम कुछ फर्क पड़ा. कोइंसिडेंटली अप्रैल 2020 को मैंने गायनोवेदा प्रोग्राम देखा. देन उसके बाद मैंने ऑर्डर कर दिया एंड पूरा 2021 फरवरी में मैं क्योर कर ली. एंड आई एम शॉक्ड कि इतनी जल्दी इतने कम समय में कैसे प्रॉब्लम मतलब क्योर हो सकती है. ये मेरे लिए मिरेकल है. मेरी जर्नी की स्टार्टिंग यहीं से हुई है. अगर मैं आज कंसीव कर पाई हूँ तो मैं क्रेडिट एक गायनोवेदा को ही देना चाहूँगी. थैंक यू सो मच गायनोवेदा. और जब आपको पता चला कि आपने कंसीव किया है, आप प्रेग्नेंट हो गया, कैसा लगा आपको? और इतनी पागल हो गई थी ना कि हे भगवान, मतलब ये मेरा ही टेस्ट, मतलब प्रेगनेंसी किट बोले ये मेरा ही है क्या है, मतलब
इमेजिन भी नहीं कर सकती कि ये मतलब मैं कंसीव कर पाऊंगी। आपको कब से तकलीफ थी? 2018 में शादी हुई थी, तो 1 ईयर बाद हम प्लान कर रहे थे, बट मेरा पीरियड्स फिर इरेगुलर हो गया था और 2 मंथ्स 3 मंथ्स ऐसा हो गया था। तो नेट पे इतनी डिफरेंट इंफॉर्मेशन थी, तो मैं एकदम कंफ्यूज हो गई कि मतलब क्या करना चाहिए मुझे और क्या नहीं करना चाहिए। तो मैंने होममेड रेमेडी सब स्टार्ट की करना, बट वो मतलब 1 ईयर तक वो किया, बट वो कुछ वर्क नहीं किया। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अभी मुझे एलोपैथी ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, ज़रूरी है, नहीं तो मतलब आई विल नॉट कंसीव। बहुत सारे मतलब ब्लड टेस्ट रिपोर्ट सब करवाई, फिर एग बनने के इंजेक्शन लिए थे। मुझे मतलब कंसीव हो गया था, बट वो हार्डली 3-4 डेज के बाद मिसकैरेज हो गया। तो मैं एकदम अपसेट हो गई। और फिर आपको गाइनोवेदा के बारे में कैसे पता चला? मैंने गाइनोवेदा का ऐड तो देखा था फेसबुक पे, तो मुझे लगा चलो एक बार मुझे चांस देना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट ये था मेरे लिए कि उसमें था कि साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होगा। फिर आपने गाइनोवेदा की जो दवाई है वो शुरू करने के कितने दिनों बाद आपको कंसीव हुआ? 1.5 मंथ के बाद कंसीव हो गया। सो चेतना, गाइनोवेदा में जो हम 3X प्रोग्राम देते हैं, आपने कितना फॉलो किया था और आपको कैसा लगा? गाइनोवेदा का जो 3X प्रोग्राम है, डाइट, मेडिसिन और डॉक्टर सपोर्ट, ये मुझे बहुत ही मतलब कंसीव करने में बहुत हेल्प किया है। अशा पद्धतीने शेकडो स्त्रियांना लो AMH असताना सुद्धा आयुर्वेदाच्या मदतीने अगदी नैसर्गिकरित्या गर्भधारणा झालेली आहे आणि या संदर्भातले केस स्टडी आंतरराष्ट्रीय जर्नलमध्ये प्रकाशित सुद्धा आहेत। तर वंध्यत्वाविषयी तुम्ही माहिती देताय। आजकाल आपण बघतो आपल्या आजूबाजूला अशा अनेक महिला असतात ज्यांना PCODचा देखील त्रास असतो, मात्र PCOD असून देखील या महिलांना नैसर्गिकरित्या गर्भधारणा होऊ शकते का? सध्याच्या युगामध्ये PCOD हा अगदी सर्रासपणे आढळणारा स्त्रीरोग आहे। आयुर्वेदानुसार PCODचे जे मूळ कारण सांगितलं गेलंय ते आहे कमकुवत पाचनशक्ती। अन्नाचं पचन जेव्हा नीट होत नाही तेव्हा त्या दरम्यान काही टॉक्झिन्स रिलीज होतात आणि हे अगदी स्टिकी म्हणजे चिकट असतात। हे टॉक्झिन्स रक्ताच्या माध्यमातून सर्व शरीरामध्ये पसरतात आणि ते आपल्या अंडाशयापर्यंत पण जाऊन पोहोचतात। अंडाशयापर्यंत पोहोचल्यानंतर तिथे होणारी जी अंड्यांच्या वाढीची प्रक्रिया आहे त्याच्यामध्ये अडथळा निर्माण होतो आणि ही वाढ योग्य प्रकारे होत नाही आणि त्याचमुळे ही जी अपरिपक्व अंडी असतात ती ओव्हरीमध्ये म्हणजेच अंडाशयामध्ये जमा होतात आणि कालांतराने याचे रूपांतरण गाठींमध्ये होते आणि PCOD होतो। अशा प्रकारे PCOD मध्ये अंड्यांची वाढ नीट न होत असल्यामुळे आणि योग्य वेळी अंड फुटून बाहेर न पडल्यामुळे वंध्यत्वाची समस्या निर्माण होते। अशा वेळी अनेक स्त्रियांना IUI, IVF किंवा ओव्हॅरियन ड्रिलिंग सारख्या शस्त्रक्रियांचा सल्ला मिळू शकतो। पण या कृत्रिम उपचार पद्धतींशिवाय सुद्धा आयुर्वेदाच्या मदतीने PCODच्या मूळ कारणावर काम करणं अगदी सहज शक्य आहे। आयुर्वेदामध्ये सांगितलेल्या हरितकी आणि पिप्पली सारख्या ज्या औषधी आहेत यांच्या मदतीने आपल्या शरीरामध्ये पसरलेले जे टॉक्झिन्स आहेत त्यांचा डिटॉक्स पद्धतीने समूळ नाश करता येतो, ज्याच्यामुळे अंड्यांची वाढ तर योग्य प्रकारे होतेच, परंतु वेळेवर अंड फुटून बाहेर पडण्याची प्रक्रिया सुद्धा योग्य प्रकारे होऊ लागते। गायनोवेदामध्ये याच पद्धतीने अनेक महिलांना PCOD असताना सुद्धा आयुर्वेदाच्या मदतीने नैसर्गिक गर्भधारणा झालेली आहे आणि याविषयीचे रिसर्च युरोपियन जर्नलमध्ये पब्लिश सुद्धा आहेत। तर जसं आता डॉक्टरांनी सांगितलं, वंध्यत्वावर आयुर्वेदाने आपल्याला मात करता येऊ शकते आणि यासाठी स्क्रीनवर तुम्हाला नंबर दिसतोय, त्याचबरोबर वेबसाईट दिसते, यावर संपर्क साधून तुम्ही नक्कीच डॉक्टरांचं मार्गदर्शन घेऊ शकता। या विषयासंदर्भात आपण त्यांच्याकडून आणखीनही माहिती घेणार आहोत एका छोट्याशा ब्रेकनंतर। Right from a young age, especially Indian girls, we are conditioned to believe that, it's okay to have period problems. Your periods can skip over some months. It's okay to deal with period pain. And I think somewhere down the line, that was bothering me, and that narrative had to be changed. So Gynoveda is the world's first Ayurveda femtech company, and femtech stands for feminine technology.
we are focused on menstrual and reproductive health of women right from the age of 15, when a young girl gets her first period, which is known as menarche, until the age of 55, when a woman gets her last period, which is menopause. So today we have Ayurvedic supplements for women from puberty to menopause. It is irregular periods, PCOS, vaginal discharge, women who are finding it difficult to conceive, and general wellness. So focusing on internal health and healthy inside out. One of the big difference between Ayurveda and the modern medicine is the fact that modern medicine focuses more on symptomatic relief. And it also, I think, somewhere ingrains into our head that, you have to manage with this problem lifelong. क्योंकि ये कभी ठीक नहीं हो सकता. The fundamental premise of Ayurveda is about root cause solution. It takes time. You need patience, you need positivity, but it's definitely going to show you results. So I think it's more long lasting, it's more sustained as compared to what some of the other lines of treatment have. And statistics indicates that 1 in 5 women in India today have PCOS. And the reasons are attributed to, a dietary, lifestyle changes that they need to do, stress and genetic. While that could be true, but what it doesn't tell you is that this can get naturally reversed. And at Gynoveda, we are extremely grateful that we've had the opportunity to have more than, at this point of time, over 1 lakh women who had suffered through PCOS, tried various kind of treatment options, whether it is contraceptive pills, the harmful hormonal injections, hormonal pills, and then came to Ayurveda as the last resort. And today, over 6 months to 9 months of consumption of the Gynoveda Ayurvedic supplements, they have been not just treated of PCOS, but I think they are back to being the best version of themselves. Statistics indicates that 1 in 5 women in India today have PCOS. And the reasons are attributed to, a dietary, lifestyle changes that they need to do, stress and genetic. While that could be true, but what it doesn't tell you is that this can get naturally reversed. And at Gynoveda, we are extremely grateful that we've had the opportunity to have more than, at this point of time, over 1 lakh women who had suffered through PCOS, tried various kind of treatment options, whether it is contraceptive pills, the harmful hormonal injections, hormonal pills, and then came to Ayurveda as the last resort. And today, over 6 months to 9 months of consumption of the Gynoveda Ayurvedic supplements, they have been not just treated of PCOS, but I think they are back to being the best version of themselves. So I think nowhere in our schools or even in our social conversations do we talk about how to distinguish between what is a good vaginal discharge and what is not. And so the fear of not coming out in the open, and sometimes we don't even talk about it to our best friends or our mothers or our sisters because there is this fear of being judged. I think it's extremely under-leveraged, under-addressed. There are tons of women out there across different metros of India who still don't know how to track ovulation. They don't know that at the time of ovulation, if you have a transparent mucus kind of a discharge, it's a healthy discharge. And I think that is what needs to change, is enabling women to not just take charge of their health, but also come out and seek help and find the right solutions. To know more, visit gynoveda.com. You are now fearless to be free. This is where my personal journey of becoming an entrepreneur at the age of 45 sets in. At a time when most people are extremely comfortable in their lives, mainly in their professional career, is when I started to get restless. No, it wasn't about midlife crisis. It's midlife clarity. I moved out of a successful corporate career of 17 years to pursue what I wanted to do. And this nudged me real hard to listen to my inner voice and take that much needed leap of faith. To solve a real problem. One of the largest problems that we women go through for over 40 years of our life and over 400 period cycles, our menstrual and reproductive health. In most parts of India, including in urban cities, even talking about our periods today is still considered a taboo.
Right from the age of 15 until the age of 55, women go through all kinds of things. Period pain, hormonal imbalance, period disorders, issues with conception, menopause, and the huge physical and emotional discomfort associated with it. Yet, we tend to disregard it. About 60% women in India experience period pain. Around 42% are dealing with irregular periods. And over 30% are diagnosed with PCOS, polycystic ovarian syndrome, one of the largest menstrual disorders in the world today. As women, we are made to believe that dealing with pain and problems and having a high tolerance towards it is a sign of strength. We are conditioned to be primary caregivers. Taking care of our family and loved ones takes center stage. But attention towards our own health becomes the last priority. This is the narrative that I wanted to change. Women taking charge of their health and normalizing conversations around menstrual and reproductive disorders. My mission is to enable women gain freedom from their period problems. And this is exactly what prompted me to start an online community on Facebook. It's called Circle of Sisterhood. A community of women, by women, for women, where women can freely talk and discuss about their most intimate health problems. Without the fear of being judged, they can open their hearts out to each other without any inhibitions, seek medical advice and solutions from doctors and experts, show their vulnerabilities, and stay committed to their health goals. I'm extremely grateful that what started off as a 3-member team in 2020 in the peak of COVID, when all of us were struggling with what life has thrown at us, has now beautifully bloomed to over 75,000 members, and today is the largest Indian Facebook group on women's health. Women share their struggles, their success, their failures, their challenges, their milestones, and above all, their real selves. Some extremely heart-wrenching and some very heartwarming narratives that we get to witness every day. Today at Gynoveda, over 3 lakh women from different age groups, from different Indian cities, with different professions and with different aspirations, are all woven together by a single thread to gain freedom from their menstrual disorders. Circle of Sisterhood embodies the spirit of women building women and celebrates their narratives of being free to lead a life with their head held high and to achieve their dreams. Come, let's listen to them. There are no cysts in the scan. So relieved to see that. God knows the kind of wonder it did to me. My periods always on time, no cramps. This is something wonderful and crazy. We are happily conceived, so that was like a joyful moment and we both cried. In fact, I was crying less, my husband was crying more. शादी के 7 साल बाद कंसीव किया और खुशी का ठिकाना नहीं था. I'm very happy. I started seeing results which I was surprised. That was my happiest day of my life, honestly. मुझे उस दिन लगा कि मेरा rebirth हो गया है. I started getting so nice results. I'm so happy. That's the kind of freedom we need. And this is the power of women taking charge of their health. And you realize when you listen to such stories every single day, and like I mentioned earlier, I feel so privileged and so grateful to be able to make a change in the life of one woman. And that revolution has begun. And then it sets you from your core free. For me, being free is to feel relieved, energetic, and empowered. And when that happens, you get to celebrate life
at every age and at every stage, with immense gratitude for the opportunity that life has bestowed upon you. So here's to celebrating life. Thank you. Today's shows, we will be talking about PCOS, like polycystic ovary syndrome. And here with me is Rachna Gupta, co-founder Gynoveda. Hi, how are you, Rachna? Hi, Chitwan, doing very well. Thank you. So, I'm gonna explain some people like Gynoveda is what? A women health brand that is dedicated to providing Ayurvedic solution for menstrual and hormonal health issues. So my very first question to you, Rachna, is like, what are the most prominent symptoms of PCOS? And like, how do they affect women, not just physically, but mentally itself? First and foremost, Chitwan, thank you for having me over. It's the PCOS Awareness Month in September, and I think, extremely important for us to understand this at a fundamental level. That is true. When it comes to PCOS, which is polycystic ovarian syndrome, I think it brings along with it a lot of not just physical challenges, but also emotional challenges when a woman gets diagnosed with this. Most of the common symptoms associated with PCOS is irregular periods, delayed menstrual cycles. Cycles get delayed as much as over 60 days, 75 days to even 90 days. In some severe cases, women don't even get a natural period until they have induced it by way of an hormonal stimulation. Yeah. The other common symptom is excessive weight gain, which happens in a short period of time. The third thing is it starts telling on their skin. There is breakouts in the form of acne, or there is a skin darkening, which is called as pigmentation. And in very severe cases, we have seen what is called as hirsutism, which is nothing but facial hair. Yeah. So these are the common symptoms that is associated with PCOS. Okay. This is on the physical side. Okay. This is the physical one you're talking about. Yeah. That's right. On the emotional side, because of these, hormonal imbalance-induced changes, I think it brings about a lack of self-confidence in women. Because there is this weight gain that has happened, the skin which was good earlier is no longer the same. It also leads to lack of energy, because they are constantly worried about what is going to happen, will they ever be able to come out of this problem. So I think lack of confidence, lack of clarity of what needs to be done, when will they get freedom from this problem, and overall not a very positive feeling that women go through, and both of these need to get addressed, both the physical as well as the emotional part of it. That is very true. So like my second question to you, is PCOS according to you leading the cause of infertility? Yeah, so I'll give you a little, before I straight answer that question, right, I'll give you a little brief background about what we have done at Gynoveda over the last 3.5 years since we started our company. Okay. Like you mentioned in the introduction, it's clearly an Ayurveda healthcare company focusing on women's health and specifically on menstrual and reproductive health. So obviously at the core of it is the problem, which is PCOS, that we have taken upon ourselves to solve the problem from the root cause. Yes. And so far we have treated more than 2 lakh women who had PCOS for more than 5 to 7 to 10 years. Okay. And what we have seen is, especially with women who are in the reproductive age, which is the age group of 28 to 35, there women with PCOS are finding it difficult to conceive. And the reason being that because there are cysts in the ovaries, the natural process of ovulation is not achieved. And because ovulation does not happen on time, it also affects, in Ayurveda we call the egg as ovum. It also affects the egg growth, development, and the quality of the egg that is required to be ruptured at a certain time for conception to happen. That gets affected.
So yes, I would say today, with 1 in 5 women in India getting impacted with PCOS, it's definitely one of the top 2 reasons for women finding it difficult to conceive and for infertility. Exactly. That is true. Like many people are facing right now. Why people are facing PCOS only? Like there are many symptoms people are facing. But great question. Yeah. And I'll talk about from the Ayurveda life science, right? Like, well, we know that it's everywhere out there stated that PCOS is an hormonal imbalance, or PCOS is a lifestyle disorder. When it comes to how Ayurveda understands PCOS, we look at it because of excessive toxins, which is called as ama. Which is caused in our body, and these toxins get accumulated because of obviously our faulty, or rather the unhealthy, not faulty really, but the unhealthy dietary habits that we follow. A lot of young women, we recently did a survey, the largest period health survey in India, and we found that 60% of women in the age group of 25 to 34 were diagnosed with PCOS. And it's also to do with the fact that obviously they are working women, they end up staying back late in office. There is disturbances with respect to eating time in the office. That's right. They are most stressed. They end up sleeping late at night. So because of all of these things, I think the excessive accumulation of toxins in the body is what is the primary cause of PCOS. So what happens is, because there is toxins, the toxins through the bloodstream, they also reach the reproductive organs. And once it has entered into the ovaries, you have multiple cysts. And polycysts, poly means many. Many cysts get created inside the ovaries, and that is called as PCOS. And so when it comes to even the treatment and solution, Ayurveda focuses on detoxification, focuses on making sure that the digestive and the metabolism of a woman is better, and through that then the polycystic recovery is possible. Exactly. So my next question to you, it's like 1 in every 5 women today has PCOS. Would you consider that this is a silent epidemic in India? Absolutely. And I think that statistic is obviously what was known to us. What happened at Gynoveda by virtue of the largest period health survey that we've done across 3 lakh women. No other company has in India been able to bring out this kind of a survey. And in that, very clearly, a staggering 54% of women had PCOS. So the largest menstrual disorder today, in not just in India but across the world, is PCOS, or what is known as PCOD. And we spoke about the symptoms sometimes earlier. So it's very important to understand this entire problem in detail and then look at what is the solution. And in all my interactions with women, I tell a lot of, because there are young women who are affected with this problem, I always tell them that it's not a disease, it's a disorder. And anything which goes out of order is a disorder, which is similar to PCOS. So it can definitely come back on track. It can definitely, it can be reversed. All it needs is the right medication, the right diet, and lots of positivity and patience. That is totally true you're talking about. My next question to you, Rachna, that to what extent is PCOS like reversible? 100%. Right? And it might come across as shocking to women who are watching this or our viewers, but this is backed by data. And at Gynoveda, we've had some astonishing results that we feel has been a breakthrough in the Ayurvedic medicine system for reversing PCOS. And when I say I'm backing this by data, so we've had a clinical study that we did about 190 women, and an independent clinical study that has recently got published in the European Journal of Pharmaceutical and Medical Research. And at that point of time, these 190 women are all moderate to severe cases of
PCOS, which means they've been battling with PCOS for anywhere more than 5 years to 10 years and more. And what was happening to see was not just their symptoms getting reversed, but the most difficult part, which is the cysts in the ovaries, that got completely dissolved. 76% women were reported to have their cysts dissolution happening post 6 months consumption of the Ayurvedic medicines. More than 78% women got their periods back, which means their periods became regular without any hormonal medicines, any hormonal injections within 60 days of consumption. Almost 80% women saw a reduction in their weight or weight control. So we've had fabulous results. In fact, we have proof where women have shown on screen their pelvic sonography report, which is called as a pelvic USG, which shows what was the size of their ovary and how bulky it was, Chitwan, when they were diagnosed with PCOS, and the size of the cysts. And post 6 to 8 months of medicine and the Ayurvedic treatment, their cysts have been completely dissolved. So for us, that has truly been a breakthrough. And one clear message to all the women who have PCOS is it can 100% be reversed. And you don't have to live with the problem. You don't have to manage the problem. You just have to take control, take charge, and treat the problem. Oh wow, very nice. So my next question to you, is Ayurveda a side effect? Free root cure for hormonal disorder? Yeah, so it is absolutely a side effect free line of treatment. In fact, we always say this, ki no side effects, only side benefits. You have to remember that Ayurveda is, and our medicines are 100% natural, made with pure and potent Ayurvedic herbs. In fact, if you go onto our website, on the PCOS page, you will see the list of 44 Ayurvedic herbs which are mentioned there. Herbs like Shatavari, herbs like Dashmul, Varuna, Aloe Vera, Shilajit, or Kanchanar. Kanchanar absolutely potent for cyst dissolution, does not have any preservatives, does not have any chemicals. So yes, it is an absolutely side effect free treatment plan. And what it does inside your body is it does not just get you reversal from PCOS, but when I spoke about side benefits, Chitwan, we've had women who've reported amazing energy levels within 2 to 3 months. There has also been, great quality of skin and hair. And I think most important, which is not visible to us, is what Ayurvedic herbs do is they improve the immunity of your reproductive system. Okay. So it's so that even once you come out of PCOS, let's say you go back to your earlier lifestyle, you should still not be affected by PCOS. So when we talk about immunity, that's the beauty of the Ayurvedic medicine system. Wow, very nice. So Gynoveda is gonna provide every single thing that woman needs. Yes, it's a promise. Every woman's health matters. Yeah, that is true. So my last, I don't want to leave you right now, but it's my last question to you. Sure. So how is Gynoveda fighting this battle, and what is the success rate right now? Super. So we are currently at a success rate of about 75 to 80%, which means that if 10 women come to us, 8 women get complete freedom from PCOS. Okay. Maybe in about 2 to 3 cases, we are not able to solve the problem, and it is a combination of 2 things, right? One is that the woman may not have only PCOS, but she may also have other complications or disorders, and then it becomes very difficult to treat all of it in a certain span of time. The other thing is that because Ayurveda takes time, and we say this, hamara nara hai, jaldi nahi, jad se. So if you're expecting short-term results, if you're expecting overnight some miracle to happen, unfortunately, Ayurveda cannot do that for you. And which is why women, young women especially, they don't have the patience and they tend to move out. But women who are determined to reverse their PCOS, are determined to get freedom from PCOS, we've got 80% success rate with these women. And the way we do it is actually through we call it a 3X Ayurvedic program.
So the first one is, like I mentioned, a combination of 44 Ayurvedic herbs. These are medicines to be consumed on a daily basis for 6 to 9 months. The second thing is we provide them unlimited doctor support. So they can reach out to us through chat, through email, through call. We've built the largest Facebook community called Circle of Sisterhood, which has me and my entire doctor team responding to women's queries almost like 24/7. So it's the same kind of support and hand-holding that women expect in their health journey. And the third thing is what we call as a Gynovedic diet. These are some healthy habits and guidelines for leading a healthy life. So by a combination of these three things, we've been at the forefront of this mission of getting women freedom from PCOS, and happy to report, like I mentioned earlier, that we are at a 75 to 80% success rate, and we are only getting better. Very nice. Good to hear that women is achieving their goals also, and plus women is achieving their health goal also at the same time. So this is a lovely conversation which we are having right now. That's all for today. Thank you for watching and be a part of this conversation. Get candid with Chitra on Music. Thank you. Thank you so much.